regurgitate unfortunately जो आपने जैसा पढ़ा है बयान वैसा आपने लिख देना है. But the idea is कि एक मुश्किल वर्ड है जिसके स्पेलिंग आपको याद नहीं हो रहे, उसके मीनिंग आपको याद नहीं हो रहे, तो आपको पता हो, you can relate कि क्या मैंने ऑर्डर सही रखा है इनका. So try to learn the art of making mnemonics. Practice it a little bit. How would you practice? Do you know what is a calligram? What is a calligram? Raise your hand. A show of hands would be good. All those who know what is a calligram. Calligram. Do you know what is a calligram? जी. जैसे हम कप लिख रहे हैं तो उसमें यू को हम कप की शेप के अंदर बना देंगे ताकि हमें पता चल जाए वो कप ये calligram. Absolutely, and this is here one of a few examples. That's beautiful. So what you do is that when you read a word of vocabulary which is difficult and you find it difficult to learn the meaning of that word, so try to portray the meaning in writing it. You write it in a way that the meaning is conveyed. If you look here, look the way umbrella has been written. Look at the way camel has been written, C-A-M. In order to learn spelling of a complicated word or in order to learn the meaning of a complicated or a difficult or a longer word, calligram is very helpful. So आप लोगों की जो education का level है इसमें I'm sure you come across terms and words which are difficult or long. So उसको याद रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. And here we have a few clock, the O and the L, selfie, this is the selfie stick, ठीक है. Tunnel, N को उन्होंने tunnel बना दिया so that you remember the meaning of tunnel. Now, how many of you have papers and pens? Okay, can we have papers and pens for everybody? Everybody should have a paper and everybody needs to have a pen. Let's talk about a word. Regurgitate. What is the word? Regurgitate. Okay. Now, कोई भी एक मोबाइल में से अपने regurgitate का word निकाले. Anybody? एक. Okay. Everybody stop. This guy is doing it. Others don't do it. So just one person. The meaning of regurgitate is किसी भी बात को जूं का तूं बयान कर देना. अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड नहीं की, कुछ भी नहीं ऐड किया. आपने जैसा आपने किसी से कुछ सुना, लिखा, पढ़ा, आपने या देखा, आपने उसको वैसे का वैसे बयान कर दिया. As it is, absolutely. So normally हम इसको कहते हैं कि इसको आप रीस्टेट नहीं कर रहे हो, आप इसको रीफ्रेज नहीं कर रहे हो, आप इसको रीराइट नहीं कर रहे हो, आपने कॉपी पेस्ट किया है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, प्लीज डोंट वॉमिट द इन्फॉर्मेशन. इधर रट्टा लगा के इधर आपने वॉमिट कर दी है. सो द वर्ड इज regurgitate. Ji, can you stand here, say the word, read whatever you are reading from here. Ji, बोलिए. जो dictionary कह रही है वो पढ़िए जरा. It's a flow through a vessel or valve in the body in a direction opposite to normal. And its other meaning is repeat information without analyzing or comprehending it. Facts which can be then regurgitated at examinations. Right. आपके जो छापा मार बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें you have to regurgitate. Unfortunately जो आपने जैसा पढ़ा है बयान वैसा आपने लिख देना है. Whereas AO level की जो स्टडी है उसके अंदर you can give the meaning, you can analyze. आप देखते हैं कि if there is an implicit meaning or anything else. So उस लिहाज से can you write the word on the board please from यहाँ से देखें. I want you people to keep the meaning of regurgitate in your mind and prepare a calligram. We look at the word, we look at the calligram and it should depict or it should convey the meaning of regurgitate. If the question is clear, please let me know. The word is here in front of you. Is the task clear to all of you? ठीक है. Is the word clear to all of you? You have copied it correctly? Yes. All right. The word is in front of you. You have 2 to 3 minutes, or let's say 5. I want you to prepare a calligram for regurgitate. Okay? Let's see, what do you produce for regurgitate? Is the meaning clear? Yeah. Right. Anybody who would like to know the meaning one more time? किसी भी चीज को वैसे का ही
एंड वैसे रिपीट कर देना, आपने उसको एनालाइज नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं, आपने वैसे का वैसे कह दिया. शी इज जस्ट रिगर्जिटेटिंग व्हाट शी हर्ड. शी डजंट नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, शी डजंट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड इट or what is going on. Okay, so that is the meaning of regurgitate. अब जो latecomers हैं, I'm not going to explain it time and again, time and again, time and again. So I'm afraid they'll have to sit and wait for the next activity, but make sure that you have a pad and a pen with you. Anybody, once you're done, please raise your hand. But the calligram should be very clear. Let me tell you again what is a calligram. Look at this calligram here. कि आप लफ्ज को इस तरह से लिखते हैं कि उस लफ्ज का मीनिंग उसके अंदर आया हो जाए, उसके अंदर क्लियरली कन्वे हो जाए. सो हियर क्लॉक, सेल्फी, सी दिस सेल्फी स्टिक, टनल, umbrella, and the other words. Calligram is a very famous, interesting device to help memorize difficult words of vocabulary. अगर आप कोई टर्म, टेक्निकल टर्म भी पढ़ें और आपको नहीं याद हो रही है वो, या कोई टेक्निकल वर्ड है, so try to make a calligram for that, आपकी मेमोरी के लिए. So that's calligram. Anybody? You got it? Come, let's see. Make it big and clear. It should be big and clear, and everybody has to make it, because I'm gonna go, pass by and see. You have to raise it high. जी आप आ जाएं. What happened? Not yet? Okay, it's okay. Take your time. Anyone else? Paper and pen? So, what do you need to do in order to make a calligram? First of all, you have to have a word. Number two, the word for, the word that you're trying to learn, or learn the meaning of, or the spelling or something. कुछ तो आपका aim है. And number three is you should be very clear about its meaning. क्योंकि अगर आपको meaning clear नहीं है तो आप गलत portray करेंगे उसको. Right? And the last thing is you have to have the critical thinking skill. You have to be creative here. तो अगर आप क्या हैं, कद्दू हैं, तो वो नहीं होगा. हम कद्दुओं पे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. ठीक है, अगर आप छापामार टीम से हैं, छापा, कॉपी पेस्ट, तो फिर ये नहीं होगा. और इसीलिए ज़्यादातर लोग मुझे देख रहे हैं और पेज की तरफ नहीं देख रहे, जहाँ पे वर्ड लिखा है उस पर गौर नहीं कर रहे. So don't look at me, you need to write down this word on a piece of paper, look at that word and see. Come out please. How you can rewrite the word that the word depicts or conveys the meaning. आ जाएं आप. Somebody has got it. Well done. Yeah. You have done it? In a circle, it's repeating again. Right. अभी इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा बनाएं. Oh, that's lovely. That's beautiful. आप दोनों आ जाएं. So, please. So these two brilliant ladies have done a remarkable job here. Let's see what they have done. Which doesn't mean कि आप नहीं कर सकते हैं. Whatever comes in your mind. This is maybe you're learning it for the very first time. So it is difficult then at first. और मैंने word भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल दे दिया है. But the idea is कि एक मुश्किल word है जिसके spelling आपको याद नहीं हो रहे, उसके meaning आपको याद नहीं हो रहे, उसका context आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसको किससे अपने लिए एक image बना रहे हैं ताकि आपको आइंदा वो word याद रहे. And today I'm sure that once they make this drawing, या आप जो effort करेंगे, it will be very easy for you to remember this word forever and ever. Hopefully. Okay, can you explain it? इसके साइड पे आ जाएं आप दोनों. एक पे आप अपनी वाले को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, जो आपने बनाया है. सर्कल और इसमें वर्ड्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, regurgitate और In a loop. It's going in a loop. There is no addition, there is no analysis, there is no addition. ठीक है? So it's a lovely depiction of the word. It's going in a loop as it is. घूमी जा रहे हैं. It's a vicious circle. Lovely.
Can you explain? This is a man who is vomiting. The R is the head of the person and it's throwing out the word regurgitate. ठीक है? So that's a good concept, it's a good idea. So maybe अगर आपके जहन में ये image रह जाए और आपको शायद spellings याद ना रहें, शायद pronunciation याद ना रहे, but somewhere if you hear a word regurgitate, तो vomit से आपको याद आ जाएगा कि ये जूं का तूं बयान किया गया है किसी चीज़ को, कुछ addition नहीं किया गया, कोई analysis नहीं किया गया है, ठीक है? कोई चीज़ के अपनी कोई piece of information, अपनी सोच समझ इसमें नहीं डाली गई. So this is called what? Calligram. That was regurgitating. Thank you very much. Good job done, ladies. Very clapping. Very good job done. I understand it was a difficult word, but the soul of regurgitate of Calligram is the soul is कि आप difficult concepts, difficult words के लिए इसको use करें. Normally Calligrams are used for difficult words. Now there is another device that I'm going to talk about and it is mnemonic. Yes. Do you know what is a mnemonic? Yes, ma'am. What is a mnemonic? मैम जो भी चीजें जो आपको ज्यादा नहीं हो उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा तो आप उनको एक ऐसी चीज से लिंक करो जिसका आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है तो आप ठीक है जोड़ के याद रखते हो उससे दूसरी चीज को याद रख लेते हैं. Absolutely fine. इसका एक और जैसे टर्की का जो कैपिटल ओंकार है तो आप कहते हो कि टर्की टर्क है एक जो टर्क होता है जो मतलब ट्रक सा होता है जिससे चीजें ले जाते हैं हाँ. और वहां से उसके पास चाबी है और चाबी नीचे गिरी अंगारे के ऊपर तो आप कहते हो टर्की का जो कैपिटल ओंकार है तो टर्की में बंदा बैठा हुआ है और उसकी चाबी गिरी अंगारे के ऊपर जो अंगारा वो अब उठा नहीं पा रहा. तो एक कॉन्सेप्ट आप लिंक करो चीजों. अब ये स्टोरी कौन याद रखेगा? But that's okay. So what is the best idea? So yes, absolutely correct. Mnemonic निकालें जी अब आप और फिर यहाँ पे word लिखिए mnemonic. Please erase the board. Do the honors. Erase the board. And now mnemonic is a device in which you take, yes, for a difficult concept, number one, anything which follows a chronological order, anything which requires a chronological order, एक खास तरतीब में आपने कुछ चीज़ याद करनी है तो उसके लिए we use mnemonic device and it is very useful. For example, planets के नाम हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में आने चाहिए हैं. रेनबो के कलर्स हैं, एक ऑर्डर में आने चाहिए हैं. और कौन सी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल्स हैं, ठीक है. इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त mnemonics बने हुए हैं. मैंने आपको शायद एक mnemonic पहले भी बताया था कि अक्सर लोगों को ये confusion होती है कि I और E का ऑर्डर क्या होगा. Do you remember I told you about a story about it? मैं दोबारा बताती हूँ those who missed it. कि रिसीव में ई क्यों पहले आ जाता है, आई बाद में क्यों आ जाता है और जहाँ पे अदरवाइज आई पहले क्यों आता है. सो आई के सर पे क्या है? डॉट. वो डॉट उसका ताज है, यानी कि आई क्या है? बादशाह है. सो वो ये कहता है कि जो ई है ना वो मेरे हमेशा पीछे रहेगा बिकॉज आई एम द किंग सो आई हैव टू बी एट फ्रंट. बट देन द किंग इज अफ्रेड ऑफ द साउंड ऑफ स्नेक. तो जहाँ पे परसीव, रिसीव, कंसीव, जहाँ पे डिसीव, जहाँ पे की आवाज आ जाती है ना तो ये जो हमारा पॉलिटिशियन बादशाह है ये कहता है कि जी अवाम पहले आ जाए, ई साहब को आगे कर दो क्योंकि मैं तो सांप से डरता हूँ, ये इसी को काट ले. सो इसलिए जहाँ जहाँ पे की साउंड आएगी जिस वर्ड में देन आई एंड ई स्वैप देयर पोजिशन, अदरवाइज वो सेम. सो दैट्स अ वेरी, बच्चों के लिए ये स्टोरी याद करना बिकॉज आई के सर पे ताज है वो पहले आएगा अनलेस देयर इज अ. So this is a mnemonic in shape of a story. A mnemonic can be in shape of a sentence also, can be in shape of a word also. ठीक है? Let me show you a few mnemonics. तब तक वो mnemonic यहाँ पे लिखेंगे. Please write down the word mnemonic. एक corner पे लिखिएगा because अब कुछ लोग आके अपने mnemonics यहाँ बताएंगे. Mnemonic का जो word है वो start हो रहा है M से. So itself it is a difficult word. So इसका mnemonic which I have made is Mom, mnemonic is not demonic. क्योंकि ये demonic, demon की spelling तो बहुत easy है ना, isn't it? D-E-M-O-N, demon, demonic. So mom, mnemonic is not demonic. कि मुझे ये याद रहे कि जो mnemonic के spelling है वो demon से related हैं और इसके पहले M है. So that's a mnemonic I made for my children, but for my students when they were learning. When I was teaching them this device, thank you so much. Please sit down. पढ़ दीजिए.
A learning technique that aids information retention or retrieval in the human memory, often by associating the information with something that is easier to remember. Easier to remember. So मेरे लिए, thank you so much. Or for my children who are too much into horror movies and all, mom, mnemonic is not demonic. So जब भी I say the word mnemonic, so they remember कि इसमें एक M आता है और इसके spelling demon के spelling से related है. Simple as that, right? So again, to learn spelling, complex idea, or particularly when something has to follow an order. आप चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं, थैंक गॉड मेरे पास ये था. It's okay, no problem. For math, please excuse my dear Aunt Sally, parentheses, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. So if you want to learn the order, so please excuse my dear Aunt Sally, and we tell these students कि जब आपको पता है कि आपका ये English का, math का, तो वो अपने जो mnemonics है ना, वो कहीं पे अपनी cheat sheet, अपने question paper पे, बूटी नहीं बनानी, अपने क्वेश्चन पेपर पे या अपने आंसर शीट पे कहीं पे पहले से बना लें. So you can refer to this thing. So that's a lovely. Please excuse my dear Aunt Sally. Mnemonic for the planets. Planets. My very educated mother just served us 9 pizzas. It's a very common mnemonic, people know. और अब चूंकि प्लूटो जो है वो अब उसका नहीं रहा हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा, served us noodles. ठीक है? There's another, my very easy method just speeds up naming planets. अब ये लोगों ने बनाए हैं इसलिए आपको शायद ये पूरा सेंटेंस याद करना मुश्किल होगा, but if you make mnemonic for yourself, अपनी तरफ से आप क्रिएट करेंगे तो आपको regurgitate का मीनिंग याद रहेगा हमेशा के लिए क्योंकि आपने क्रिएट किया वो. So we are going to create a mnemonic right now. ठीक है? The name of the continents. Do you know what is the mnemonic for this thing? Any idea? इसका बड़ा मजे का mnemonic है ताकि याद रहे कि continents के नाम क्या क्या हैं. Eat an apple. Eating or eat an apple as a nice snack. Eat an apple as a nice snack. ठीक है ना? So that's a very good one. आपको पता है adverbs जो हैं वो एक ऑर्डर में आते हैं. कितने टाइप्स के ऑफ एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस. अगर फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली, अगर एक सेंटेंस के अंदर हमने टाइम, मैनर और प्लेस को इकट्ठा यूज करना है तो क्या कोई ऑर्डर है उनका? यस. ऐसा नहीं है कि अगर आप एडवर्ब्स 3-4 तरह के एक सेंटेंस में यूज करें तो किसी भी ऑर्डर में यूज करेंगे. यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इफ यू वांट टू यूज ऑल ऑफ द एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. सो वो ऑर्डर क्या है, मैंने कैसे याद किया हुआ है? द वर्ड इज एम्प्टी. व्हाट इज द वर्ड फॉर मी? एम्प्टी. बिकॉज इट्स मैनर फर्स्ट, प्लेस एंड देन टाइम. एम्प्टी. एम्प्टी. So whenever I have to use adverbs, all of the adverbs in a go, तो मेरे लिए empty का word मेरे जहन में रहेगा. मुझे पता है कि मुझे पहले manner लगाना है. She enthusiastically, she cooked food enthusiastically in the kitchen yesterday. ठीक है. अब आपकी बात आ गई frequency की, तो वो तो पता है verb से पहले ही आता है. Usually goes, often comes, right? Always late. तो वो तो verb से पहले आता है, वो इन तीनों के साथ relate नहीं होता. So this is a very good mnemonic that I have made for myself. And now is your turn to make a mnemonic. Ready? But first of all, is the concept of mnemonic clear? Yes. Anything in which order is required? Any difficult concept जिसके लिए आप story बना लें? जैसे adverbs का order है ऐसे ही adjectives का भी order है. या आपने 9th-10th में पढ़ा होगा अगर आपने 9th-10th clear की है. Of course की होगी, right? Sure? Absolutely. OMG. Haven't you cleared your metric or 9th? Then say yes. Yeah. So, when you want to use adjectives are the describing words which add more information to the noun. So she's wearing a pink dupatta, he's wearing a yellow and black jacket, right? लेकिन अगर हम सिर्फ कलर नहीं, हम उसकी एज, उसकी चीज़ों और भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, so they follow an order. And the order is, first of all, we have to talk about the opinion. What is an opinion in an adjective? Do you know that?
Yes? Adjectives के अंदर opinion क्या है? When I say she's wearing a beautiful scarf, so for me that is beautiful. Maybe for her it's not beautiful. It's an odd color. That's not my favorite color too at all. ठीक है? He's wearing a lovely or a graceful dress, but somebody else it's not graceful. ठीक है? सो ये जो खूबसूरती है कि वो अगली है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट, ग्रेसफुल, ये ओपिनियन है क्योंकि वो मेरी नज़र में है या वो आपकी नज़र में है. दैट इज वाई वी कॉल इट एन ओपिनियन. सो दिस इज ओपिनियन. देन वी कॉल द बिग, स्मॉल, लार्ज, triangular. Then we have, sorry, that's not the size. And then the age: old, antique, modern, latest. In 1974, then we have the shape: triangular, rectangular, oval, D-shaped. Then we have the color. Then we have the origin: Latin, from France, or Pakistani, or Chinese. And then we have the material: what is it made up of? और अगर कहीं पे भी आप उसकी नंबर बता रहे हैं, अमाउंट बता रहे हैं, that she had a chocolate, so a or 5 chocolates or 1000 chocolates, many chocolates, तो वो फिर सबसे पहले आ जाएगा. सो यहाँ पे आप उसको ओ से पहले नंबर भी शामिल कर सकते हैं. आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर अ निमोनिक फॉर द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ताकि कभी भी आपने अगर अपने किसी पीस ऑफ राइटिंग में एडजेक्टिव्स लगाने हो तो आपको पता हो, यू कैन रिलेट कि क्या मैंने ऑर्डर सही रखा है इनका. आई एम गोना गिव यू एन एक्रोनिम फॉर इट, जो कि आपको अक्सर इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, एंड दैट इज OSASCOM. OSASCOM ये इंटरनेट पे है, बुक्स के अंदर है OSASCOM, but this is an acronym. I want you to create a mnemonic, a sentence. ठीक है? A sentence like these: eat an apple as a nice snack, or my very easy method just speeds up naming planets. Please excuse my dear Aunt Sally. So please prepare a mnemonic. 2 minutes, please. And this is the order. और इससे पहले अगर आप चाहें तो नंबर हमेशा फर्स्ट आता है. You can add that. Quickly. Let's see. Is the question clear? Is the question clear? All right. If you don't want to create a sentence, you can also create a story. जैसे मैंने I और E की एक story बनाई हुई है. That is a mnemonic as well. You got it? Very good. You got it? Very good. जिन जिन ने बना लिया वो front पे आते जाएं. Please come here, all of you. आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं. Okay. So आपने इसको जहन में रखना है, because OSASCOM, or so this would be a sentence or a story. Okay? Anybody else? तो जब तक हम इनकी आ जाए, come. जब तक हम इनका सुनते हैं तब तक I want you all to prepare something, because I am going to call a few now. I am going to come and see कि आपने अभी तक क्या लिखा है. So if you're not going to come here, I'm going to come there. ठीक है? All right, ladies over there at the end? चलें जी. Let's start from you. जी की मैं करूंगी, यहाँ से आप लिखिए. मेरा सेंटेंस है: all students are specialized in computer technology. ये जो और स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशली एबल होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, मतलब हम जैसे नहीं होते, तो वो हमें देखा गया कि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं. दोबारा से बोलिए. ओल्ड स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड एस, ओल्ड स्टूडेंट्स, odd मैम, odd जो अजीब, वो तो odd, yes, odd students are specialized in नहीं आ सकता, computer, COM, computer. All students are specialized computers. Okay, not bad, very good. आपको याद रहेगा. It should work for you. You make mnemonics while you're studying different concepts in your education for yourself. अगर आपको ये आइंदा के लिए याद रहेगा, works for you. आपके में आ गई है ना? So that's great. Thank you very much. Thank you. Very good. जी. On Saturday, Ali slept comfortably on mattress. On Saturday, Ali sat comfortably on mattress. Very good.
So on Saturday, Ali sat comfortably on mattress. So she has made a mnemonic. It stays in your mind. You write it time and again. So whenever you have to write adjectives, a lot of adjectives without any comma. जब आप ज़्यादा सारे adjective किसी एक noun के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें आप comma नहीं डालते हैं बीच में. ठीक है? So for example, she is wearing. अब सबसे पहले हम रहेंगे beautiful, long, red sweater from Japan. ठीक है? So I'm talking about her dress now, this red thing. So मैंने इसके accordingly, मैंने बीच में कहीं comma नहीं लगाना फिर. If I'm writing it in a story or in an essay, so पाकिस्तान के बारे में आपने 3-4 adjectives या किसी भी चीज़ के बारे में no commas in between. Remember that. All right. So that's great. आपको जहन में रहेगा अब. That's great. Thank you very much. जी, you got it? अगर किसी और ने बनाया so please come at front. Please come at front. जी. On Saturdays and Sundays, churches operate majestically. Wow. So on Saturdays and Sundays, churches operate majestically. Wonderful. That's lovely. Thank you, Janab. Order sauce and seed, cook orange mac and cheese. Works if it works for you. That's lovely. One more time. Order sauce and seed, Sauce and seed. cook orange mac and cheese. That it's not just a mnemonic, but has rhyming word in it. So that's easy to remember too. Works for you. Well done. Very good. Thank you. G. Others see a snake calm. C-O-M calm. Others. See a snake calm. C-O. A CCOM. All right. If it works for you, it works. Thank you very much. I have also made a mnemonic for it. So I have started, if it is a number, so never open Sadia's 𝐒𝐮𝐬𝐬𝐡's cabinet. Okay, mom. Never open Sadia's 𝐒𝐮𝐬𝐡's cabinet. Okay, mom. Open Sadia's 𝐒𝐮𝐬𝐡's cabinet. Okay, mom. So this works for me. I mean, मुझे कभी भी नहीं भूलता है. This works for my children क्योंकि मैंने इनको सिखाया है. But I always encourage children to make their, or students or learners to make their own mnemonics. Let me repeat. Do not think that mnemonic or calligram is for children. Anywhere, at any level of education and professional life, you can use a calligram or mnemonic for your presentations, for your learning. कोई भी difficult concept आप पढ़ रहे हैं, कोई भी difficult process आप पढ़ रहे हैं, let's say कि वो photosynthesis का है, respiration का है, किसी भी चीज़ का है, किसी भी subject का है, इस्लामियात है तो आप ग़ज़वात के order, जंगों के ऑर्डर नाम याद कर रहे हैं एक ऑर्डर में, आप खुलफा राशिदीन के नाम एक ऑर्डर में याद करना चाहते हैं, सो आप उसके लिए एक mnemonic या उसके लिए एक स्टोरी बना सकते हैं. सो mnemonic works in a wonderful way. So try to learn the art of making mnemonics, practice it a little bit. How would you practice? Practice it with your younger brothers and sisters for their concepts. So आपकी practice हो जाएगी. ठीक हो गया? Yeah. But it can work up to a certain limit. मतलब ये एक frequent के बाद मतलब आपको mnemonics से आपस में mix होने शुरू हो जाएंगे और आपको mnemonics भी याद नहीं रहेंगे या तुम याद नहीं रहेंगे या mix हो जाएंगे. वो इसलिए है कि आपने सोच लिया है कि आप नहीं कर सकते. Yes. मैंने बताया मैं काफी बात लेकिन sometimes mix हो जाते हैं. अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बनाए हुए एज अ टीचर, मुझे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत बनाए हुए, हर चीज़ के लिए बनाए हुए. एज अ टीचर मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के सुने हुए हैं. अब अगर मैं एक रिगर्जिटेट का सोचती हूँ तो मेरे जहन में उनका वॉमिट और उनका सर्कल आएगा ही आएगा, मेरे जहन में एम्प्टी नहीं आएगा, मेरे जहन में ओपन सादियास कैबिनेट नहीं आएगा. ठीक है. अगर मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जब हम हुक करना सिखाते हैं, कि हुक बनाना सिखाते हैं, तो मैंने एक बच्चे को जब टाइफून का वर्ड, कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे जहन में मास्क हो गए हुए हैं, स्टैम्प हो गए हुए हैं, तो जब मैंने उनसे कहा कि अच्छा टाइफून का बनाओ, आई थिंक वो ग्रेड 4 या 5 का स्टूडेंट था, और टाइफून जो पानी के अंदर तूफान वगैरह, तो उसने टाइफून फ्लश, जब मैं फ्लश करता हूँ तो जो अंदर गोल गोल घूमता है पानी अंदर चले जाता है, दैट्स अ टाइफून. So he drew a commode seat and all that. It's so easy. I gave them a word, ivory, हाथी के लंबे दांत, and I told you
द स्टोरी ही मेड फॉर वॉज द निमोनिक आइवरी के मीनिंग को याद रखने के लिए आई वरी कि मैं परेशान हूं कि जो एलिफेंट्स के दांत हैं उनके लिए वो मारे जाते हैं. सो आई वरी. वाई डू यू वरी? बिकॉज वो एलिफेंट्स के दांत उनकी वजह से एलिफेंट्स आर बीइंग किल्ड और वो एक्सटिंक्शन पे पहुंच रहे हैं. सो कंफ्यूजन नहीं होगी. आपको लग रहा है पहले से ही हार मान ली आपने. डोंट डू दैट. नो. व्हाट डू यू डू? You come across a concept or an idea or a process or something in order and you understand कि यार ये तो याद नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको grasp करो concept को. जब तक आपको आइवरी का मीनिंग अच्छी तरह से नहीं पता चलेगा कि आप उसके लिए निमोनिक या कैलीग्राम बना सकते हैं, नहीं बना सकते. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग. अब मसला कहाँ आ रहा है कि आपको वो ऑर्डर याद नहीं हो रहा, या वो रेस्पिरेशन का या वो लाइफ साइकिल का प्रोसेस याद नहीं हो रहा. ठीक है. सो उसके लिए आप अगर एक निमोनिक या कैलीग्राम बनाते हो तो वो 10 चीज़ों के लिए भी हैं. आपको याद रहेंगे, आपको लग रहा है आपको याद नहीं रहेंगे. आई कैन नेवर कन्फ्यूज ओसैसकॉम विद एम्प्टी. मुझे पता है वो एडवर्ब का है, वो एडजेक्टिव का है. मैम इसके पीछे एक रीजन हो सकती है कि जब आप बना रहे हो तो जब आप जल्दी ना करें, उसका आप जल्दी ना करें. टेक योर टाइम. वो ऐसे सिंपल सा ना जल्दी भूल जाए. एग्जैक्टली. समथिंग दैट यू हैव मेड एंड आपने इंटरनेट से नहीं उठाया. समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, आपको याद रहे वो. एंड येस, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग दैट टेक योर टाइम. डोंट हेस्ट. इंटरनेट से ना उठाएं, खुद बनाएं अपने कैलीग्राम्स, खुद बनाएं अपने निमोनिक्स. आई वॉन्ट यू टू स्टॉप हियर फॉर अ मिनट. और अपने एजुकेशन से रिलेटेड क्या आपके जहन में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स या प्रोसेसेस या एनीथिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है जिसके लिए आपको लगता है कि मैं निमोनिक बना सकता हूँ या सकती हूँ या बना लेना चाहिए? थिंक ऑफ समथिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक सेशन हुआ दैट वाज फॉर एसे राइटिंग. एसे राइटिंग का एक अपना स्ट्रक्चर है. एसे का एक स्ट्रक्चर होता है. हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालना ही डालना है. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हुक आनी ही आनी है, फिर थीसिस स्टेटमेंट आना ही आना है. तो एज और वो एक ख़ास ऑर्डर है, हम उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते. ये नहीं हो सकता कि टॉपिक सेंटेंस में जो है वो नीचे ले आऊँ और कोई और हुक ऊपर चली जाए, या कुछ ऊपर नीचे नहीं आ सकता ना. आर्ग्यूमेंट्स पहले ले आऊँ और मैं टॉपिक सेंटेंस एंड में ले आऊँ. सो एक चीज़ ऑर्डर में आ रही है, अब उसको याद रखने के लिए आई कैन मेक अ निमोनिक फॉर इट. सो एनीथिंग फॉर एनी प्रोसेस. कैन यू टेल मी समथिंग ना? मैंने आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से बता दिया. नाउ यू टॉक अबाउट योर सब्जेक्ट, वेदर इट्स कंप्यूटर्स, साइंसेज, medical or any other language or philosophy or whatever it is. Think. केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त लोगों ने निमोनिक्स बनाए हुए. ब्रिलियंट, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग उस ऑर्डर में याद रखने के लिए. सो दे हैव मेड लवली थिंग्स. यस, इंटरनेट भरा हुआ इससे. ऑलवेज मेक वन फॉर योर सेल्फ. एनीबडी एल्स? मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. मैथ्स में फॉर ट्रिग्नोमेट्री. ओके. तिगनी का नाच नचाता होगा ट्रिग्नोमेट्री. आपको नाम ही कितना मुश्किल है. यस, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली. और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? एंग्लो सैक्सन, oh God, it's very complicated. So yes, to understand the whole process and the chronological order, if you make a mnemonic, that would be very helpful. Very good. Chinese language में क्या? आज ये मेरे हाथों नहीं बचता. हाँ जी, चाइनीज लैंग्वेज में क्या? चाइनीज लैंग्वेज तो बहुत बड़ी है. नी हाओ कहते हैं ना. हाँ जी, नी हाओ. स्टार्ट करते हैं नी हाओ. हाँ, मतलब स्टार्टिंग मतलब उनके नीचे. हाँ, खैन हाओ. हाँ, इस तरह वो जो नी का वर्ड है ना, हम पंजाबी में यूज करते हैं नी. इथे आ. हाँ, क्लैपिंग. तो आपने नी हाओ का मतलब उससे याद रखा हुआ है. अच्छा, तो खैन हाओ है मैं ठीक हूँ, इसके लिए क्या बनाएंगे आप? खैन हाओ का मतलब है मैं ठीक हूँ. नी हाओ कैसे हैं? खैन हाओ मैं ठीक हूँ. तो खैन हाओ खैर से हूँ. ठीक है, ओके. अच्छा, निया का मतलब है आप, व का मतलब है मैं, और ता का मतलब है हाँ, और उनको प्लूरल करना तो मैन. इसके लिए क्या निमोनिक बनाएंगे आप? Take your time. Take your time. But that's a good one. So yes, just for fun. But yes, it is true. Again, आपने क्या किया? एक वर्ड का मीनिंग याद रखने की कोशिश की है ना आपने, कि नी हाउ जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए कैसी हो. ठीक है ना?
तो उसके लिए आपने उससे आपके लिए whatever works. Yep, that's great. ये आपके लिए नहीं है. Okay, you all have paper and pen? Yes. Right. Okay. Can somebody please read the paragraph for me from there? People, girls at the end. Can somebody read the paragraph for me? Yes. Yeah. As the sun went down, a group of curious folks found themselves outside Manor, बड़ी हवेली, ठीक है, और उसका नाम है Revent, okay? The big creaky door opened slowly, showing a dark Hallway. Stories from a long time ago. Little did they know, as they stepped inside, that the evening would be full of surprises. A mix of suspense, interesting stories, and maybe even a bit of magic. Their adventure in discovering the Raven Secrets was just starting. Okay, now what you're going to do is, how many people we have? So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perfect. So, I want all of you, so this is one group. आपकी तरफ से मुझे एक पेज मिलेगा. आप तीनों की तरफ से एक पेज मिलेगा. ठीक है? So that's how we are going to do. और आप लोगों ने लिखना है इसका second paragraph. This is the first paragraph of a story. This is the opening paragraph of a story. Now, what are you going to write? You're going to write 7 more lines, and which should be continuation of this paragraph. Okay? So, are you all going to write? Yes. No. You all are going to discuss and produce one paragraph on one page. Is the instruction clear? Yes. Great. Please give your page a unique combination of number, और उसको आपने याद रखना है. जब भी कोई पेज आपका आए, आपके पास किसी का भी पेज आएगा, उस पे जब आप स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, तो पहले आपने वो अपना नंबर लिखना है और उसके बाद आपने स्टोरी को कंटिन्यू करना है. So for example, these 3 ladies have chosen a number 109. जितनी दफा भी किसी और का पेज आपके पास आएगा, अपना नेक्स्ट पैराग्राफ लिखने से पहले आपने क्या लिखना है? आप लोगों ने. सो आपने अपने जो भी नंबर चूज किया है, आप वो लिखेंगे. ओके, डन. कैन आई हैव योर पेज? आपके पास अब जो पेज आ रहा है, आपने स्टोरी का 3rd पैराग्राफ, आपने फिर ये पैराग्राफ पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अब ये पेज आने लगा है, आपने स्टोरी का ये पेज पैराग्राफ, फिर ये पैराग्राफ, और जो कंटिन्यूएशन अब बन रही है, अब जो आपने लिखा उसको भूल जाएं. इससे आगे आपने कंटिन्यू करना है नीट हैंडराइटिंग में, स्टार्टिंग विद योर कोड. सो लेट्स हैव, आई एम गोना रीड द फर्स्ट स्टोरी एंड देन यू गाइज कैन रीड. ओके, कैन यू टेक अ साइड? दोनों वहां पे चले जाइए जरा. So, as the sun went down, a group of curious folks found themselves outside Revent Manor. The big creaky door opened slowly, showing a dark hallway filled with stories from a long time ago. Little did they know, as they stepped inside, that the evening would be full of surprises, a mix of suspense, interesting stories, and maybe even a bit of magic. Their adventure in discovering the Raven's secret was just starting. Their curiosity overpowered their fear and hesitancy as they stepped inside. Why are they afraid? We have no idea. So whoever started the paragraph should have written that. Okay. Taking careful steps, though it's very nice. I mean, taking careful steps, very nice. Forward, they reached the middle of the hallway where they found themselves standing on a red mark. One of them, wanting to take a closer look at the mark, stooped lower and boom, I guess it's boom, the wooden plank they were standing on broke, sending them all down some. Some of them died, and the remaining found themselves hanging in the middle of nowhere. They started to shout for help. Then they saw a monster, dark, creepy monster coming towards them. First, they got afraid and started looking at each other. Got no idea what is going on to happen next. Suddenly, a person with white wing
huge, large wings come. They thought that the winged man might help them as he looked innocent. All of them ran towards him, calling for help. As they came near, the man with the wings turned into a big, dangerous monster. Two of them fainted, but others ran to look for some kind of savior. They couldn't find a way outside. They felt them when an angel appeared. Now a real angel appeared, and an angel attacked on that monster, and after a very dangerous and fearful scene of fight, that angel person killed the monster, and we felt relieved and got rid of monster. And the last, we thanked to the angel. So that's a very interesting story. Before that, they read their stories, and a few more from here. The idea is कि क्राइसिस सिचुएशंस रंग बदल के आपको लगता है कि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ होता. वो अपनी शक्ल बदल के, अपनी इंटेंसिटी बदल के आपके सामने आता है. पैनिक होने के बजाय यू जस्ट हैव टू सी कि इस पजल को सॉल्व कैसे करना है. वेयर आर यू गोइंग टू पुट द पीसेस. जैसे उनके पास स्टोरी आई, उन्होंने कहा मैम इसको तो कंक्लूजन हो चुका हुआ है, एक तो हैंड राइटिंग की समझ नहीं आ रही और ये कंक्लूजन आ चुका है, अब हम क्या लिखें. द पॉइंट इज द लाइफ इज आस्किंग यू टू कंक्लूड इट. Life is asking you to do something else for it, so you have to. So don't complain, don't whine, don't say कि ये तो हो गया. No, whatever is needed, you have to do it. So that's the lesson that we get from this lovely activity. कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप किस पैटर्न पे चले गए, एकदम से क्या आ गया आपके सामने जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था, जो आपका थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं था. So let's have a few interesting stories from them, and then I'm going to keep them safe. जी please, one by one, सामने आइए, पढ़िए. So we have this. So the next, what happened? Raven's Secrets was just starting. So here it starts. Scared, they entered the hallway, and suddenly a skeleton poked out from above. They hid behind each other. Slowly, they started moving towards the stairs. One of them slipped and suffered a confusion. Out of nowhere, they heard music playing from far away. They freaked out, ran towards the room, and locked themselves inside until the sunrise. In that dimly lit room, their hearts raced as they tried to make sense of mysterious melody. The haunting tune echoed through the walls, adding. थर्ड पैराग्राफ है और अभी तक कोई कैरेक्टर नहीं है, अभी तक हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ है. इट्स स्टिल कि हम एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ट अप कर रहे हैं, जो अब आप उसको अब रिलेट करें एसे के साथ. दिस इज द थर्ड पैराग्राफ ऑफ अ स्टोरी, एंड वी हैव ओनली एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एक्सप्लेनिंग हाउ द थिंग्स वर अराउंड. कोई एक्शन नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है. जी. The haunting tune echoed through the walls, adding a layer to the already tense atmosphere. With the cautious glances exchanged, they gathered their wits and decided to explore further. Unlocking the doors, they ventured into the manor. अब जाके पहले पैराग्राफ से थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन कनेक्ट हुई है, अब जाके एंटर हुए हैं. ठीक है. सो सी द ऑर्डर. जी. In this manner, several fairy tales hint the walls of hallway. While exploring the stories, the curious folk came across the story of the raven and statue with the name the Happy Prince. This story revolves around the theme of kindness and helping each other. In this story, the raven helps the poor by taking the jewels from the previous statue. अच्छा, ये वो कव्वा रेवन हो गया. Oh. And it's a conclusion. After all the problems they faced over there, they came to conclusion that the haunted place was around by Prince, which was so kind and helping others. What a contrast. Thank you very much.